ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے، ہم سلسلے کو وہیں سے شروع کریں گے. آپ ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی یقینی طور پہ جاننا چاہیں گے کہ لاسٹ ٹائم جو کہ اسرائیل نے حملہ کیا تو پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا تھا، بلکہ ایران کی پارلیمنٹ، پاکستان واحد ملک تھا کہ ایران کی پارلیمنٹ میں یہاں پر ان کے پریزیڈنٹ نے جس پروسیس کو لیڈ کیا، تشکر پاکستان کے نعرے بھی لگے. اس کے بعد مسلسل ان کی ٹاپ لیڈرشپ بھی پاکستان آئی شکریہ ادا کرنے. اب جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کیا رول پلے کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو حکومت میں نہیں ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتی. آپ کا ایز ایکسپرٹ کی بات کر رہا ہوں، میں ایکسپرٹ کے. لیکن جو میرا خیال ہے ہمارے لیے یہ بہت ہی ایک پھر لمحہ فکریہ ہوگا، ڈیفیکلٹ ہوگا. ہمیں ہر حال میں جو صحیح راستہ ہوگا وہ یہ کہ ہم ایران کی طرح ایران کے ساتھ بالکل ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اس میں. لیکن جب اسرائیل نے ایران پہ وہ حملہ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ وہ نہیں تھے جو آج ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس طرح انگیجڈ نہیں تھے یورپینز کے ساتھ اور ان کے ساتھ جیسے آج ہے. تو ہمیں بہت ہی سلیقے سے چلنا پڑے گا. اس میں اچھی بات صرف یہ ہے کہ سنس دین ایران اور سعودی عربیہ کی لنکیج جو ہے وہ اب بہتر ہو گئی ہے. ان کے سفارت خانے کھل گئے، ڈپلومیٹ، اور انہوں نے بالکل کہہ دیا ہے کہ جی ہم نہ اپنی سرزمین نہ فضا استعمال ہونے دیں گے، کھولیں گے امریکہ کے لیے. اور گلف نے اسٹیٹس نے بھی کہا ہے. تو ہمیں بھی آئی تھنک یہی کہنا پڑے گا کہ جی پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی بالکل ہم ایران کے ساتھ ہیں. اور بیکاز ایران پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. اس میں ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہم یہ پرسپشن بھی دیں کہ ہم اس حملے کو کنڈون کر رہے ہیں. بالکل میم، اس میں ہم وشی واشی سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے، ہمیں فرم سٹیٹمنٹس دینی پڑیں گی. You are absolutely right. Now we have to indulge Hassan in our discussion. As Hassan, so as the Madam Ambassador was telling, so Pakistan must have very clear stance and tell the world, so where we stand. We are again against this supposed attack. But I want to ask you one thing, Hassan, if you are looking around the what's that name, Epstein files, so yesterday which has been released, so where it has been said very clearly, so Trump is compromised by Israel. In this context, if he is a compromise, how he will behave? Well, I think everybody now in the United States, I mean, the American people, American experts, they are saying that Trump's policy is not longer America first, it's Israel first. So in the United States, you have in the Republican Party, for example, around Trump and Trump himself, they are called Israel firsters. And then there is the MAGA base, which is America firsters. So they want America first. But Trump and his clique, his advisors, his ministers, and a majority in the Congress, they are Israel, pro-Israel. Israel is more important. And most of them are compromised, as you say. So this is one reason people suspect that why Trump has to do everything Israel and the Israeli lobby are asking him to do. But I think there is one issue which is related to the Iran situation I had to mention, is because there will be, not only in the region, there will be problems. For example, if the Hormuz Strait is closed for international oil trade, although most of the oil goes to the east, to China, Japan, Korea, India, and so on, the economic and financial system in the world is so interconnected and it's so fragile, especially the American financial market. Japan now have a huge financial crisis and bond markets could collapse. So the whole global financial and monetary system, or the transatlantic one at least, will collapse immediately. So this is something which makes I think the vulnerabilities of dollar, if you look at this point of the time, today the gold market also crashed in USA. So the vulnerability of dollar, if there is a war or there is some problem in the Hormuz, so will it impact the dollar decline? Oh, definitely, because there is a flight from the US dollar. I mean, even in the bond market, the US treasuries, many nations are dumping the treasuries, even here in Europe. We have Swedish and Norwegian
and Danish pension funds, they are selling their American assets. They are repatriating because they say the American market is no longer secure, especially with Trump and the leadership there. So the American dollar has been declining against the basket of international currencies very much. And there's also the fact that the American financial markets, which are so inflated, it's a lot of hot air. It's a big bubble pushed by it the is AI. it is not backed by the industrial output or the industrial base. No, it has nothing to do with the real economy. Even the AI boom is, I mean, the AI is too exaggerated. The value produced by the AI is not commensurable with the value in the markets they have. And the Chinese companies like DeepSeek, they showed that, Yes. with very simple tools, you can produce the same things. So this is a huge bubble, but the bubble is necessary to refinance the bond market. So because these major companies, the big financial companies who own the AI companies, they buy American bonds. They are the largest buyers of American bonds. And then they use the bonds to borrow more money from the banks, and the banks can borrow more money from the American central bank. So it's like a cycle within the United States that is keeping the image of the American economy growing. So any pinprick can blow the whole balloon. But no, they have also introduced the cryptocurrency, which is again worse than the paper currency. At least in the paper term we have some paper, but in the cryptocurrency you don't have anything. So I will come back to you, Hussain. So madam, अगर आप जिस अभी हसैन बात कर रहे थे कि अभी हम ईरान के जो इशू की बात है हम वो पॉलिटिकल करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, इसका इकानमी का बड़ा अहम यानी कि इसका एक्सपेक्ट है. आप माशाल्लाह भी एक यानी कि थिंक टैंक की रूह रवां हैं जो कि पाकिस्तान के इकनॉमिक लिंकेजेस और रीजनल कनेक्टिविटी पे बहुत ज़रा काम कर रहा है, बल्कि आप उसको एक स्पीयर हेड कर रही हैं. तो आप हमें बताइए कि जो आप देख रही हैं अपने इस वेंचर्स में कि कभी आप लोग किस जगह जा रहे हैं कभी कभी, तो आप कैसे देखते हैं कि खुदा न खास्ता हुर्मुज़ में प्रॉब्लम होता है, जो रीजनल कंसेप्ट है जो कनेक्टिविटी कंसेप्ट जो आप लोग भी प्रमोट कर रहे हैं वो कहाँ तक इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, वो तो मैंने आपको पहले कहा कि हम तो जो वेस्टवर्ड देख रहे हैं और रीजन को इंटीग्रेट करने का देख रहे हैं, क्योंकि हमारा तो ये सीपैक ऑपरेट हो ही नहीं सकता जब तक आपकी ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों कनेक्टिविटीज ना हो. लेकिन कम से कम वेस्टर्न तो खुले ना, इस वक्त तो दोनों ब्लॉक्ड है. और ईरान का अगर हो गया तो और ज्यादा नेचुरली प्रेशर आप पे आएगा. लेकिन इसकी एक और भी है, क्योंकि अगर ये अटैक हुआ तो बात सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक तो फिर नहीं रह जाएगी ना, क्योंकि देखें यूरोप को जो तेल जाता है, अगर ईस्ट को तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाता है तो यूरोप को मलाका स्ट्रेट से निकल के जाता है, ठीक है ना. और वहां पर भी साउथ पैसिफिक में आपको पता है बहुत ज्यादा टेंशन्स है. और इस वक्त दोनों ईरान और वो रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े हुए हैं, बल्कि यूरोप भी ईरान के साथ है, क्योंकि उनके भी इसीलिए आपने देखा जब JCPOA से अमेरिका निकल गया था तो यूरोपियन कंट्रीज नहीं निकली थी. उन्होंने अपना पूरा उसका मयाद पूरी की थी न्यूक्लियर एग्रीमेंट की, सिर्फ अमेरिका अलग होके बैठ गया था. तो अगर ये बढ़ा तो सिर्फ ये इस खित्ते तक नहीं रहेगी जंग, तो फिर ये इस जंग के शोले जो है वो साउथ पैसिफिक में भी आपको नजर आएंगे और जगह पे भी नजर आएंगे. और ज्यादा ये भी हो सकता है कि फिर इंडो पैसिफिक में भी ये चीज जिसको ऑफ कोर्स अमेरिका इंडो पैसिफिक कहता है, हम तो नहीं कहते, लेकिन ये कि हम एशिया पैसिफिक कहते हैं ये बात. हाँ, हम तो एशिया पैसिफिक कहते हैं कि वो खास तौर पे बिल्कुल वो फिर बात अगर हॉर्मुज़ बंद हो जाता है तो चीन के लिए तो रास्ता है गवादर से, बिल्कुल. तो देखिए उधर भी फिर आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है. तो ये ईरान का जो मसला है ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, ये मशरिक़ वस्ता में भी जाएगा, ये साउथ चाइना सी की तरफ भी जाएगा. ये ऑलरेडी आपने देखा है कि साउथ अमेरिका तक तो पहुंच ही गया है.
तो मैंने जैसे कहा कि फिर और जगह भी प्रॉक्सी वॉर्स शुरू हो सकती हैं। आप ये तो नहीं हो सकता कि अमेरिका जो है बाकी लोगों के इंटरेस्ट को एक जगह हिट करेगा तो बाकी भी अब 1950-60 के ममालिक तो नहीं है ना, आजकल तो वो अमेरिका से भी आगे खड़े हुए हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। सिक्योरिटी में अगर चाइना देखें तो बहुत आगे है इनसे अब। वो नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जाहिर सी बात है जब बात बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल हो जाएगी तो इस तरह तो चुप नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे नहीं तो और चीजों के मगर मैम यहाँ पर एक सवाल है, टूल्स यूज करेंगे, यहाँ पर एक सवाल है, यूज करेंगे। यहाँ एक सवाल है, आप जो बातें कर रही हैं, जो हुसैन बात कर रहा है, बड़ी यानी कि सेन वॉइसेस हैं, ये अक्लमंदी वाली बातें हैं, जब मॉरल पे जो आती हैं या जिसको मॉरल वैल्यूज़ भी कहते हैं कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। मगर अभी जो एप्स्टाइन फाइल्स का केस खुला है उसमें तो हमने देख लिया जो वेस्टर्न का जो स्पेशल भी अमेरिकन खुला है कि उनकी लीडरशिप के मॉरल्स क्या है, वो कहाँ तक कंप्रोमाइज्ड है। क्या जो लोग पीछे बैठे हुए हैं जिन्होंने इनको कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, क्या इनको वो प्रेशराइज नहीं करेंगे कि उनके ऑब्जेक्टिव को सर्व करें और हमला करें? देखें, ये एप्स्टीन फाइल्स तो अब से नहीं चल रही है, तो बहुत अरसे से चल रही हैं, बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। और आप सही कह रहे हैं कि ये सारे मतलब कुछ आप कि खुद ऐसे ट्रेड्स होते हैं कि आप फंस जाते हैं, कुछ फंसाए भी जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब रियल पॉलिटिक्स की बात आ जाती है तो उस वक्त देखें कौन मॉरल्स की तरफ देख रहा है, कौन ह्यूमन राइट्स की तरफ देख रहा है। मोरालिटी तो आपकी इन चीजों में फिर नहीं रहती ना, कि जब आपका अपना कोर्ट स्टेट हर एक के इंटरेस्ट होते हैं वो आ जाते हैं, और साथ साथ अगर लीडरशिप भी इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो फिर वो दो तरीके होते हैं, या तो वो अंडर प्रेशर आके और फिर रिजाइन कर दें, ठीक है ना, या ये है कि आफ्टर ऑल लीडर तो एक ही होता है ना। ये तो नहीं आप कह सकते कि जी लीडरशिप जो है उससे पीछे बाकी सारी जो किसी भी मुल्क के बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो उस मुल्क को चलाते हैं, वो खाली एक लीडर तो नहीं होता, खाली ट्रम्प तो नहीं चला रहा है ना। बिल्कुल। तो क्या वो प्रेशर नहीं डालेंगे कि जी आपके इस मॉरली कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से, इसमें तो अभी उनके बहुत सारे मिनिस्टर इसमें कंप्रोमाइज हैं, वो कैसे डालेंगे? वो तो उनके मिनिस्टर्स बहुत सारे इसमें कंप्रोमाइज हैं। अरे जी, मिनिस्टर्स के अलावा भी तो इदारे होते हैं ना, आखिर उनकी भी डीप स्टेट भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, जुडिशरी भी है, पब्लिक भी है। चंद मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, नहीं चलाते हैं, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। इंटरनल प्रेशर्स भी बहुत होते हैं, और एक बाज़-औक़ात टाइम आता है कि फिर खुद जो सेन वॉइसेस इन द स्टेट होती हैं, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, फिर वो उठती हैं। ये तो नहीं हो सकता कि वो बैठी रह जाती हैं। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देखिए लोग लिख भी रहे हैं, वो लोग तो बाज़-औक़ात ये भी कहते हैं कि ये शायद जो मिड टर्म इलेक्शंस अब होंगे इस नवंबर में, उसके बाद शायद बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो ट्रम्प की बढ़ जाएं। ये भी उसकी हेल्थ भी इतनी ख़राब है कि उसकी वजह से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हो रहे हैं। अब उनको अल्जाइमर्स भी हो गया है, तो यहाँ तक भी बातें हो रही हैं कि ही इज इनकेपेबल, तो क्या पता। अच्छा, मैं आपको दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, मैं आपकी तरफ आता हूँ दोबारा। हसन, सो व्हेन वी लुक एट वन साइड इज एटीट्यूड ऑफ यूएस इजराइल एंड दे आर द सपोर्टर्स, बट ऑन द अदर साइड, so if we look at what China is doing in Middle East, can you give us a little bit brief how the China is engaging with the Middle Eastern countries, including Iran and other Iraq and Saudi Arabia, everybody? Yeah, I think the Chinese are working, consistently on their, building up this whole new order I mentioned in partnership with nations of the global South, because they know that they should not rely on the United States and the EU. They should build their relations and their economic connections to the global South. And the whole Belt and Road Initiative is based on that, is to build in the Eurasian geographical, landmass and ecosystem, and then incorporate Africa into that picture
to build a structure of connectivity, of economic development and diplomacy to make sure that geopolitical games are no longer played. And for example, strengthening the relationship with Central Asian nations, which has always been, the playground for the great game, Afghanistan and Iran. So one of the big developments that China contributed to is to have the normalization of relations between Iran and Saudi Arabia. That was a game-changing event, I think, in the Middle Eastern history. Yes, because much of the conflicts in the region were part of this, unfortunately, the Shia-Sunni divide. They tried to play on that game. And the Chinese managed to bridge that gap, not only with Saudi Arabia, but also with Egypt. Egypt is also a very important player, and now there is a very good normalization of relations between Egypt and Iran. But in all these relations, China is using its economic, technological, and industrial power to make these countries, to develop these countries' economies and connect them together. Like we have enormous investments in Saudi Arabia and in Egypt to industrialize the economy. And that the Saudis don't need financial Basically, support, it's a Chinese philosophy, dialogue and development. Yes. And through it, they also the philosophy of peace and security through economic development. Bilkul. They think if you don't have economically prosperous societies, you will always be unstable. If you don't produce enough food, if you don't have jobs for young people, if you don't have water, if you don't have electricity, you will be unstable politically forever. So this has been China's focus, and it's working, it's going steadily, despite all the problems that are created. We had the war in Gaza, but this did not stop the economic development of the region in the other countries, and it's accelerating. So this is a completely different ecosystem. How the people of Middle East look at China? What is their view about China? This has changed dramatically in recent years. Before that, there was this propaganda against China, like in Iraq, for example. We even had a regime change because the prime minister in 2019 went and signed major agreements with China to exchange oil for construction and for technology. He was actually overthrown in a color revolution. Okay. Yes, and Trump administration played a key role in that. The British and other powers in Europe played a role in overthrowing him. But now the view of China is changing because people can see that China has a completely different philosophy. It's not like the United States. It's not, and this whole debt trap thing is disappearing because it has no basis in reality. And they also see that the industrial development of China, the quality of products, like in the Gulf countries, we have Chinese cars, not only electric vehicles, but even conventional cars are more popular now in the Gulf countries than European cars because they are as luxurious, but they are more efficient and cheaper. Yeah, so they are more, I think they have all the qualities what a consumer wants. So we are moving toward the end. अगर end में मैम कि आप कुछ 1 or 2 minutes में अगर आप अपना कोई point of view देना चाहें आज की पूरी discussion पे 1 or 2 minutes quickly. जी देखिए दुनिया बड़ी तेजी से चेंज हो रही है और इस चेंज होती हुई दुनिया में हमें अब ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है और हमें किस किस्म की अपनी फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए कि हमारा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म तीनों इंटरेस्ट जो हैं वो सिक्योर रहें और हमारी डेवलपमेंट, हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उस पर किसी तरह का असर ना आए और हमारी सिक्योरिटी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो भी इतनी हमने साथ साथ बढ़ानी है कि हमें कोई अपना सिक्योरिटी पे कोई हमें थ्रेट ना कर सके, हमें किसी का खौफ ना हो. हाँ, तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया. बहुत समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है और हमें अपने शॉर्ट टर्म, एज आई सेड, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को मिक्स नहीं करना चाहिए. हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट क्या हैं और उसमें हमने किस तरह मैनेज करनी है चीजें, लेकिन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को हमें बिल्कुल अपने सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए. आपने बजा फरमाया.
ہمیں اپنے جو کہ اپنے مفادات ہیں ان پہ ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. مگر قائد اعظم نے بھی جیسے فرمایا تھا کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ فرینڈلی ہے, ہم ہر کسی کے ساتھ دوست ہیں, ہم کسی کے خلاف کوئی اگریسو بیہیویئر نہیں رکھتے, یا ہمارا کوئی انٹینشن نہیں ہم کسی پہ اٹیک کریں یا ہم اگریسر ہوں, مگر ہم اپنی جو کہ ہماری سوورینٹی ہے اور ڈگنیٹی ہے اس پہ بھی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اور یہ ہم نے 25 مئی کو مئی 2025 میں ہم نے ثابت کیا کہ کوئی بھی ہمیں چیلنج کرے گا تو ہم آئیں گے. مگر ابھی جو حالات ہیں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بہت عقلمندی سے چلا جائے, کہ بہت فہم و تفہیم سے چلا جائے, نی جرک ریاکشن نہ دیا جائے. ہمیں صبر و تحمل سے چلنے کی ضرورت ہے. یہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے یا گلوبس ہوتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ دن کو کچھ اور رات کو کچھ اور ہو, یہ بڑا لمبے عرصے تک چلتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ چیزیں بلڈ ہوتی ہیں. یہی بات ہماری نیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ نہ کرے کہ بس یہ فوراً کچھ کرو. نہیں, ڈپلومیسی اور اکنامک لنکیجز یہ سارے جو ایشوز ہوتے ہیں بڑے تحمل سے بڑی عقل مندی سے ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ابھی جو پاکستان کا سٹانس چل رہا ہے, پاکستان اپنے آپ کو ایک ایسی سٹیج پہ لے آیا ہے کہ ایک طرف ایران بھی ہم پہ اعتماد کرتا ہے تو دوسری طرف یو ایس بھی ہم سے بات کر رہا ہے, یورپ بھی بات کر رہا ہے. ایک طرف ہم اگر سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے ڈیفنس ڈیل کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ترکی یا دوسرے بہت سے مسلم ممالک کی ساتھ ایسی ڈیفنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں. کہنے مقصد یہ ہے ابھی جو ہماری پالیسی کا کنٹرول نظر آ رہا ہے وہ بڑا پرومزنگ ہے, مگر فیوچر کے لیے اسپیشلی اکانومی کو درست کرنے کے لیے شاید ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ایک چیز کو بڑا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو کہ اکانومی کو اکانومسٹ ہی سمجھتے ہیں, بینکر یا اکاؤنٹنٹ نہیں سمجھ سکتے. جس کا کام ہے آپ اسی کو لگائیں اس پہ. بہت مہربانی دیکھنے کا ہمارا پروگرام آج کا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.